Sashiburi Mina, it took me quite long to come up with this video, approximately 7 days. But then again, I was busy traveling, then I was busy preparing, then I am preparing right now for my upcoming college exams. Then I have my CDS, so I have a lot to study. But then again, coming with a video at 3:17, I made a poll on Instagram stating what video you want next, a love story or a comedy, and obviously love story one. मैंने ना love story novels पढ़ के अपनी hope इतनी high कर ली है कि अब मैं hopeless case हो चुकी हूँ. I hope you understand. And of course, these men out here, excluding this, he pisses me off sometime. And if you have already watched Boruto, so you can understand me, I think. Today's story is from the ancient time, and I leave it up to you if you consider it a story of love or a story of war. Two contrasting words, right? But then again, it is a story of a warrior, and I'm very sure that being an Indian, you are already aware of this mythology. To those who are outside India, because I have some of my subscribers and viewers from Tajikistan as well, so privet, kak dela. So I'll tell you that at the end of the video. Let me know if I pronunciated it right. And stay tuned. Love may not necessarily be between a man and a woman, a boy and a girl, but between anything, I personally believe, because I love anime, I love books, and I may come up with a book in near future that I'm still thinking, but I have not decided yet. But then again, so if you love something, you dedicate yourself to that thing, right? So that is somewhere a love story for me, and then a war, because the novel is divided into two parts, and you get to see love in the first part and the war in the second part. So it is indeed a very good combo of these things. Though you don't get to see war, there's no deep explanation about the war, but you get to know a character of that war. So the story is from Kashi, from the Mahabharata. Mahabharata was 18-day long battle between Kaurav and Pandavas. And I am very sure you are already aware of the unbeatable warrior named Bhishma, and the one who eventually defeated him, Shikhandi. Let me know, give me a thumbs up if you are already aware of the name. Shikhandi, Bhishma, they were warriors, right? Then where was love story? The book that I'm going to tell you about is the one who had two lives. Now, since you are an Indian, you already know Shikhandi had two lives. But there was a love story in her previous birth. She was warrior in the second one, but she was already a warrior for me in her previous birth as well, when she was Amba. If my video gets too long या मेरी video थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो 2x पे देख लेना, but definitely give it a try. ये novel बहुत अच्छी है क्योंकि combination मिलता है love और war का दोनों का, and I'm going to tell you a little bit about this kingdom as well. I won't say kingdom, but the process, because what actually होता क्या था कि स्वयंवर होता था. स्वयंवर was kind of competition where a target was set, and if the competitors fulfilled the target, the girl was there. मतलब वो जो लड़की थी वो उनको जीत लेते थे. They used to win that girl, and ऐसे करके वो लोग शादी कर लेते थे. ऐसा ही एक किंगडम था काशी, जिनके राजा की 3 बेटियां थी, अम्बा, अंबिका एंड अम्बालिका. अम्बालिका सबसे सुंदर थी. शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ 3 of them, एंड उसी से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी थी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक स्वयंवर होता था, एक कंपटीशन रखवाया जाता था, एंड दैट वाज हाउ एक्चुअली ये कंपटीशन रखवाए क्यों जाते थे. द अर्लियर किंग्स, दे यूज्ड टू हैव दिस मैट्रिमोनियल अलायंस. अपने बेटों की शादी या बेटियों की शादी दूसरे किंगडम के राजा से करवा कर दे यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व एंड मेक अ लार्ज किंगडम आउट ऑफ देयर ओन. सो एक तरह से ये एक्सपेंशन थ्योरी होती थी. सो स्वयंवर था, बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही थी, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया. अम्बा जो थी, शी वॉज ऑलरेडी इन लव विद अ प्रिंस नेम सलवा. सलवा जो थे, ये थे किंग, इनका एक किंगडम था सलवा, एंड ही वॉज अ प्रिंस ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम. बट हमारी नोवेल में बताया गया है कि जो ये प्रिंस थे, ही वॉज अंडर द रूलर ऑफ काशी. जो इसके अम्बा के फादर थे, ही वॉज अंडर हिम, और उन्हीं के साथ बड़े हुए थे, अम्बा के साथ बड़े हुए थे. एंड इवेंचुअली स्टार्टेड लाइकिंग. शी डिसाइडेड टू मैरी हिम. उसके फादर को भी कोई ऐसे स्पेशल दिक्कत नहीं थी, बट ओनली कंडीशन वॉज ही शुड एटलीस्ट बी कम्पिटेंट इनफ टू विन हर अगेंस्ट ऑल द किंग्स विच आर ऑलरेडी अग्रीइंग टू मैरी हर.
सो एक तरह से कंपटीशन डिसाइड हुआ था, कुछ लिमिट्स रखी गई थी दैट यू आर कुछ टारगेट्स रखे गए थे दैट यू आर सपोज टू हिट दीज टारगेट्स एंड win the girl. So a day before Swayamvar, she decided to spend some time with Salwa, as definitely he would be nervous. There's going to be a competition in which he had to win her. That was the only way how he can marry her. So she talked to him and discussed a little bit about their future, and also she was very fond of horse riding. So then they both decided to go for a horse riding. The next day, the final day, when it was about to the final day that she was going to marry the love of her life, होता क्या है कि there comes a prince called भीष्मा. So भीष्मा आते हैं and he was a legendary warrior. He was blessed by God. So भरी सभा में आकर ये अनाउंस कर देते हैं that these princes were going to accompany him and marry his brother, जिनसे ये princess शादी करेंगी. Everybody was shocked. उसके बाद कुछ kings जो होते हैं, some brave kings tried their best to defend these girls, but they were no match for this unbeatable warrior. तो वो इवेंचुअली उनको लेकर जाते हैं. अम्बा वॉज रिलक्टेंट बट शी वॉज मोर शॉक्ड टू सी दैट सलवा डिडंट इवन ट्राई टू प्रोटेक्ट. एटलीस्ट आकर कम से कम थोड़ा ही सही, भले हार जाता बट एटलीस्ट एक बार आकर डिफेंड तो करता, बट ही डिडंट. सो वो अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू करते हैं टू कुरुकुरु, और काशी में देयर वाज क्वाइट सम डिस्टेंस, सो दे ट्रैवल थ्रू दैट. After traveling quite some distance, they had the short break in which he genuinely had a conversation with these girls and then came to know that the girl was quite fond of horse riding. So वो offer करते हैं अम्बा को to have any pony that she like and then to go for riding along with him. So on his way back, they were laughing and she was shocked to see Salwa standing there with a sword and literally challenging the warrior. So that was a shocking moment for Salwa as well. He was expecting her to be disheartened, crying, traumatized, trembled. Instead, she was smiling with the person who literally abducted her. He challenges Bhishma that he won't let him take the girls outside his kingdom and that he would defend them. To this, Bhishma replied, he was just a kid and he should return back. He would tell the entire kingdom that he was a brave person, he was very tactical, and nobody in the kingdom ever gave such competition to Bhishma as the prince Salwa did. But Salwa was adamant, वो टिके रहे that he would fight, और एक स्ट्रोक से ही भीष्मा ने उनको हरा दिया था, मतलब, and he just ran for his life. बाद एक और फेज है, go read it out on your own, I won't be telling you everything in detail. तो जैसे ही वो लोग किंगडम पहुंचते हैं, शी वॉज मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी, नॉट जस्ट द पैलेस बट होल ऑफ द किंगडम वॉज ब्यूटिफुल इंक्लूडिंग द पीपल. सो शी वॉज वेरी एन्चैंटेड विद ब्यूटी एंड विद सम टाइम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद शी रियलाइज दैट शी लव्ड भीष्मा एंड वॉन्टेड टू मैरी हिम. उनको लगता है कि जो उनकी बहनें हैं दे आर सुटेबल फॉर द अदर एंड शी मस्ट मैरी द बॉय. सो शी कन्फेस्ड हर फीलिंग टू हिम, to which he rejected. उनकी फीलिंग को रिजेक्ट कर देता है एंड वो बहुत होपलेस हो जाती हैं. वो बताते हैं अपनी ओथ के बारे में. उनकी एक ओथ होती है दैट ही विल रिमेन बैचलर फॉर हिज लाइफ एंड वोंट बियर अ चाइल्ड. तो उनकी वो ओथ सुनकर शी वॉज वेरी होपलेस. वाई डिड ही इवन बॉट मी हेयर व्हेन आई वॉज नॉट इवन विलिंग टू मैरी. फेल्ट डिजेक्टेड एंड डिसहार्टन्ड. सो वो डिसाइड करती हैं दैट शी इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू स्टे इन हिज किंगडम एंड वो अपने किंगडम वापस जाएंगी. तो वो एग्री कर देते हैं और जैसे ही वो वापस जाती हैं वो देखती हैं सलवा वॉज सिटिंग द थ्रोन. वो किंग बने हुए होते हैं एंड जब वो वापस जाती हैं उनके पास दैट शी इज़ फाइनली बैक, वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं. वो बोलते हैं दैट यू वेरी हैप्पी व्हेन आई केम टू रेस्क्यू यू, बट नाउ व्हाई हैव यू कम बैक? यू वर हैप्पी विद हिम सो यू मस्ट गेट बैक. देयर वाज एक्चुअली अ डिफरेंट एस्पेक्ट. मुझे लगा कि जो सलवा है ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द किंगडम. वो कहते हैं नाउ दैट आई हैव गॉट द किंगडम व्हाई शुड आई मैरी यू. तो ही वॉज इवेंचुअली टारगेटिंग द किंगडम इन द फर्स्ट प्लेस. ही नेवर लव्ड द गर्ल एंड नाउ शी वॉज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स. She felt hopeless now. The one she loved relinquished her, the one she confessed her feelings to deserted her, and she decided to go to forest along with the eunuch. And वो उनकी companion होती है. वो दोनों forest में जाते हैं and spend the last moment of their life. अपने थोड़े से past के बारे में discuss करते हैं. And then during her last time of
लाइफ जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं, वो एक प्रण लेती हैं, एक प्रॉमिस करती हैं दैट शी वुड बी बॉर्न अगेन. शी मेड अ प्रॉमिस टू द गॉड दैट शी वुड बी बॉर्न अगेन टू एंड द लाइफ ऑफ वन who was responsible for all this suffering, the great legendary Bhishma. She was indeed born again. और जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें इस सेकंड लाइफ के बारे में बताया गया है और कैसे उनकी ग्रूमिंग होती है. हाउ डिड शी मैनेजेस ऑल हर थिंग इन स्पाइट बीइंग फिजिकली अ गर्ल एंड मेंटली अ बॉय. Shikhandi was indeed a great warrior, not as in she was the reason behind Bhishma's defeat, but also just look at the struggle. She trained herself that hard that she was fighting alongside men, a battle in which no women was allowed. She was fighting along with them. At an age when all the girls of her age were deciding, when they were confused what to wear and were choosing husbands, she was fighting alongside men. So that gives me goosebumps, I would say goosebumps, that she was fighting so well. Shreya's story खत्म हो गई लेकिन प्यार कहाँ था? So as I have already mentioned, love is not just between two persons, but I believe love is for the dreams, for dedications, for the promises that you made. So let's give a different definition to this love, because she loved that dream. वो dedicate कर लेती हैं अपनी life को. उन्होंने पूरी अपनी लाइफ अपने आप को ट्रेन ही तो किया that she wanted to defeat that guy who was responsible. Let me know what are your thoughts on this new definition of love, and you may vary, and I value that because everybody has got a different opinion. So that's it.